Hello everyone, my name is Zumama Naeem Khan and I'm here with you to have the solution discussion and the paper analysis of class 8 slot 4 GTSC 2020. I hope आप सबने GTSC attempt किया है और सबका बहुत अच्छा गया है and I know that आप बहुत ज़्यादा eagerly wait कर रहे हैं solutions का. So I'll not be taking any more time, and since I'm your physics faculty, I'll be discussing with you the physics portion. Okay, on your screen let us have the first question. Okay, here it is. A child is blowing air with a straw near the opening of another straw which has its other end in the soft drink bottle. Okay, there is some soft drink bottle like this. There is a straw, so there must be soft drink inside it. Now there's another child that is blowing air into this end, okay, and it was observed that the level of the soft drink in the straw rises up as soon as air is blown over the open end. This is the open end बच्चों, है ना? This is the open end because this end is already in the cold drink. Which one of the following best explains the reason for rise in level of the cold drink? Okay, first of all, let us understand that whenever air is going to be blown in this type of situation, when you are blowing air, you are putting up something with a very high speed. So that means here the air is at a very high speed, and high speed creates low pressure, right? It creates low pressure. तो अगर उसके अंदर बच्चों लो प्रेशर हो गया है, सो लिक्विड इज गोना मूव कहाँ से कहाँ, यहाँ देखिए इसको पुश करेगा और अंदर की तरफ वापस से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड विल स्टार्ट मूविंग. दिस इज व्हाई द एंटायर लिक्विड और सम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू गेट इनसाइड द straw. Okay, why? Because it is going to move from high pressure to low pressure. So let us see which of these will explain the reason that we are looking for. Okay, so the first option is blowing of air decreases pressure over the opening of the straw. That's what I've told you just now, that if you are going to blow the air, it is going to decrease pressure. It is going to create low pressure, and so the liquid is going to move from high pressure to low pressure region, which is just at the opening of the straw. तो पूरा liquid उसमें rise कर जाएगा. Okay, next question on your screen बच्चों. A bob of simple pendulum is set in motion to and fro. How does a bob दिखता कैसे? ऐसा होता है. Okay, it has some length and then a sphere is attached at the bottom. Okay, to and fro means बच्चों ऐसे जाएगा, वापस आएगा, इधर जाएगा, and then it will come back. Okay, this type of movement it will be having. In the beginning, its time period was 1 second. Okay, after 30 oscillations, the bob appears to have slotted down. The time of one complete oscillation then would be okay. So they are saying that after 30 seconds, it seems like that the bob is now moving with a slower speed. Then what can you say about its time period? Okay, but your time period of a bob is dependent only upon the length of this length, this string की length जिसमें वो आपने bob लगाया हुआ है, and acceleration due to gravity, right? तो इसलिए बच्चों देखो यहाँ पे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आ रही है जिसकी वजह से टाइम पीरियड कम होना चाहिए था. आ रही बात समझ में? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दीज वैल्यू. ये जो बोल रहा है स्पीड कम हो रही है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड, राइट? सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी दैट इट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. तो पहले क्या था? पहले 1 सेकेंड था, अभी भी 1 सेकेंड है. क्यों? क्योंकि वो उसकी स्पीड आपको कम होती हुई दिख रही है, स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन क्या उसका टाइम पीरियड उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा. सो वॉट एवर वॉज द टाइम पीरियड अर्लियर इज गोइंग टू बी नाउ एज वेल. सिंस पहले 1 सेकेंड था, अभी भी 1 सेकेंड ही रहेगा. ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इट इज एन असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. बच्चों असर्शन रीजनिंग क्या होता है? असर्शन में यू विल बी गिवन 1 सेंटेंस. वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है. ठीक है? रीजन मतलब क्या? रीजन में अगेन 1 सेंटेंस विल बी गिवन टू यू, और वो भी सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि जो रीजन है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा हो कि वाई असर्शन इज ट्रू, या वाई जो असर्शन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है. लेट अस सी व्हाट इज बीन गिवन टू अस. कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स. ओके, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस लाइट ओवर स्मॉल एरिया देन द प्लेन मिरर. बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में लाइट, पहले जब बताओ मुझे को, फॉल जब करती है तो बिहेव कैसे करता है. देखो
This is the convex mirror. This is the type of convex mirror. So whenever light is going to fall on its surface, it is going to diverge the light. तो diverge का मतलब क्या है, आपको तो इतना बड़ा व्यू मिलेगा, ठीक है. आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. दिस मच बिगर व्यू यू आर गोइंग टू गेट. तो स्ट्रीट लाइट में भी हम क्या चाहते हैं, वी जस्ट वांट द लाइट टू स्प्रेड एज मच एज पॉसिबल सो दैट देयर कैन बी मोर लाइट ऑन द स्ट्रीट. सो वी नीड दैट टाइप ऑफ मिरर which what it does, which diverges light, broad कर दे, ठीक है. तो स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स यूज होता है, राइट. कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस लाइट, यहाँ तक बात सही है. ओवर अ स्मॉल एरिया दिस इज रॉन्ग. इट डाइवर्जेस लाइट, और हमने येलो में देखा था, क्या येलो वाला पोर्शन क्या बता रहा है बेटा, इट डाइवर्जेस लाइट इन अ वाइडर एरिया, बहुत बड़े एरिया में. तो रीजन इज रॉन्ग बट असर्शन इज ट्रू. सो आंसर शुड बी सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. George placed two bodies. One is the steel spoon and another is the iron ball. बना लेते. This is the steel spoon बच्चों and this is the iron ball. Okay? In contact with each other. तो मतलब स्टील का स्पून जो है ना उसको ऐसे बना देते हैं ताकि ये कॉन्टैक्ट में आ जाए. Okay, this is our spoon and that is our ball. Okay. Such that steel spoon is at higher temperature. The temperature of steel spoon is high and temperature of ball is low. And now they are being kept close to each other, touching each other, right? In contact. When equilibrium temperature is reached, H units of heat energy has been exchanged between the two bodies. Okay? Which body receives the heat energy and the amount of heat energy received by it? Okay, बच्चों पहली चीज, heat is always going to be transferred from a hotter body to the colder body. हमारी given situation में hotter body कौन सी है बच्चों, स्टील का स्पून है, और colder body कौन सी है comparatively, वो है हमारा बॉल. तो द हीट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, स्टील के स्पून से बॉल में ट्रांसफर होगी. पहली चीज क्लियर. दूसरी चीज उन्होंने बोली जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए. इक्विलिब्रियम कब आता है बच्चों, व्हेन द हीट ट्रांसफर स्टॉप्स. Why the heat transfer stops? Because the temperature of this body and this body becomes equal. ठीक है. तो पहली बात तो ये कि स्पून से बॉल की तरफ हीट ट्रांसफर होने वाली है बेटा. और यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर वही होगा जो दोनों बॉडीज का इंडिविजुअल टेम्परेचर होगा. और वो कब हुआ होगा, जब स्पून से बॉल में हीट ट्रांसफर हुई होगी. कितनी, H units. ठीक है. So the answer should be spoon ball which receives the heat energy. स्पून से जा रही है बॉल में तो बॉल रिसीव कर रहा है एनर्जी, और कितनी, इक्वल टू H. आंसर शुड बी C. ओके, let us move on to the next question. A twisting funnel of wind with its narrow end towards the land is known as tornado. You must have seen tornado. कैसे दिखते हैं बच्चों, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं. तो देखिए बॉटम में क्या है इसका, ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड है. बिल्कुल ट्विस्टिंग, क्यों ट्विस्ट हो के फनल जैसा दिख रहा है, फनल ऐसे ही होता है, ठीक है. एंड नैरो एंड ऑन द लैंड, लैंड पे ये वाला एंड होता है बच्चों, ऑन दिस साइड ये वाला एंड होता है, एंड दिस इज इन एयर. इसी को हम बोलते हैं टोर्नेडो. टोर्नेडो, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. अ टोर्नेडो डेवलप्स फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म and rotates violently. Yes, because of the thunderstorm, because of the wind blowing at a very high speed, it develops, it starts whirling. Okay, ऐसे circular motion करता जाता है और अंदर की तरफ आता जाता है. rotates violently, बिल्कुल सही है. both the statements are correct and statement 2 is explaining statement 1 as well. So answer should be A. Okay. Okay, moving on to our next question. We have been given a circuit बच्चों, ठीक है. See, in a circuit, bulbs and batteries are working adequately. That means what? काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, सही है. ना बल्ब्स फ्यूज हैं, ना बैटरीज डिस्चार्ज है. क्या होगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ S1 और S3 को क्लोज करें. ये जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे, उनको क्लोज करके देखेंगे. देखो बच्चों, इफ आई क्लोज दिस S1 एंड आई क्लोज दिस S3, व्हाट विल हैपन. देखिए ये जो फर्स्ट बैटरी है, ये वाली जो है यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली मैं इसको 1 बोल रही हूँ. देखिए द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर, 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 एंड दिस इज हाउ द सर्किट इज गोइंग टू बी कंप्लीट.
तो सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट इज क्लोज, सो बल्ब्स आर गोइंग टू ग्लो. कौन से बल्ब? जो इस सर्किट में लगे हैं, जो कि क्या है, क्लोज्ड सर्किट है. कौन से लगे बच्चों? इट इज 3 and 2. So 3 and 2 both will glow. So both 2 and 3 are going to glow. Okay, answer number D. So now let us proceed to the next section, that is chemistry. Hello students. So this is the explanation for GTSE exams questions and we are going to discuss the chemistry questions. My name is Pragya Mishra and we will have the logics and the concepts behind the questions which you have attended in the GTSE examination. Okay? So yes, the very first question जो है आपका chemistry का, match the entries in the column A and the column second. So yes, we have been given these polymers in the column 1 and we have their uses, right? So we have to match them according to their use. Okay? So yes, silk. डियर स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि सिल्क की साड़ीज होती हैं, राइट? सो सिल्क का यूज किया जाता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टू मेक साड़ीज, राइट? नाउ नायलॉन की बात करें तो नायलॉन वेरी स्ट्रांग होता है बच्चों, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. सो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा होती है. सो दैट्स व्हाई वी यूज इट फॉर रोप्स, लाइक पैराशूट्स में जो आपकी रोप्स होती हैं उनके लिए आप नायलॉन का यूज करते हैं. नाउ for the third one, acrylic. Yes, acrylic is used to make, that is the alternate of natural wool. So इसका यूज किया जाता है स्वेटर बनाने के लिए. And the plastics की बॉटल होती हैं बच्चों. So yes, the correct answer is option D, which says A will match to the fourth, B will match to the 1, C will match to the second and D will match to the third. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change, right? This is the definition. Now, a chemical change is also called a chemical reaction. Which among the following is a chemical change? देखिए बच्चों, all the chemical changes influence a chemical reaction, right? So आपको बहुत एक important चीज याद रखनी है related to chemical change which influence chemical reaction, that always and always new compound or new product will be formed, right? Compound or new product will be formed while a chemical reaction is occurring. So देखते हैं evaporation of petrol. No dear student, that is just state change हो रही है, right? Evaporation हो रहा है, liquid से vapor state में change हो रहा है. So no new substance is formed. So this is not a chemical reaction. Curdling of milk. And also you can also define chemical change by कि जो change revert back नहीं हो सकते, right? आप evaporation कराने के बाद दोबारा से फिर उसको change कर सकते हो in petrol में, okay? लेकिन curdling once it is done, it cannot be revert back. Curdling हो जाती है बच्चों तो फिर कभी भी आप उसको दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते हो. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सेम देखिए, आप हीटिंग कर दोगे आयरन रॉड की टू रेड हॉट, दैट इज ऑल्सो द सब्सटेंस इज सेम, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. सब्लिमेशन भी होगा, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट चेंज इन द स्टेट. ओके, सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. Now move to the next question. Identify the compound of calcium which is yellowish white powder and is used for disinfecting drinking water. Bachcho, that is nothing but bleaching powder. The general name is bleaching powder, but its chemical name is calcium oxychloride. Okay, so the chemical name of this is calcium oxychloride. So the correct option is option C, which says CaOCl2. This is bleaching powder is the general name. Okay, move to the next one. Acids are chemical compounds with the ability to neutralize a base and characteristic sour taste. Yes, acids जो होते हैं they are sour in taste. There are two types of acids, organic and inorganic. So identify organic and inorganic respectively. We have been given 4 options बच्चों and we have to tell which one is the organic and which one is the organic and which one is the inorganic. Okay, so चलिए देखते हैं. Organic acids क्या होते हैं बच्चों? The acid
which is obtained from organic material such as plants and animals. Those are called organic acids. जो आपके plants और acids से मिलते हैं, जैसे कि आपका citric acid, जो आपका lemon, lime and oranges में मिलता है, right? That is the citric acid. Acetic acid vinegar में होता है, and also oleic acid. These are the examples of organic acid, right? जो आपका olive oil में है ना? Next, inorganic acids. Inorganic acids, those are mineral acids. Those are the acids which are derived from one or more inorganic compounds. So all inorganic acids, when dissolved in water, produce hydrogen ion and their conjugate base ions. For example, अगर आप देखो तो HCl, अगर आप इसको water में dissolve करेंगे, so it will dissociate into hydrogen ion and its conjugate base, that is chloride ion. So what is the organic and inorganic acids over here? These two are both the inorganic acids. Okay. Next, citric acid and sulfuric acid. Citric acid is your organic acid and sulfuric acid is the mineral, is a derived acid, so that is the inorganic acid. So the correct answer is option B. Sulfuric acid is again inorganic and citric acid is organic. So we have to give the answer in respective to the question. Question में पहले organic पूछा है, तो we have to tell first of all organic, right? And hydrochloric acid is nothing but HCl. These two are, both of them are inorganic acids, right? So this is not the correct option. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन सी लेवल. सो ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैस. आइडेंटिफाई अ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द फॉलोइंग. सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस आर which increased sea level, it is due to the increased temperature, right? So which is due to global warming. इन सभी का रीजन क्या है बच्चों? द ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द गैस दैट इज ट्रैप्ड टू सोलर एनर्जी, दैट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी. सो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर ग्रीन हाउस गैसेस, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर. All the options are correct, so the correct answer will be all of the above. So D option is the right one. Move करते हैं next question के लिए. Consider the following reaction. Hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide to give sodium chloride plus water. The given reaction is endothermic, exothermic, endothermic and exothermic, or we cannot say. So dear students, first of all, this is a neutralization reaction. What this reaction is? That is a neutralization reaction. When your acid reacts with base to form salt and water, that is the neutralization reaction. And in neutralization reaction, heat releases. And in any reaction, if heat is getting released, उस reaction को हम बोलते हैं exothermic reaction. So the correct answer is option B, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में आपको heat भी मिलेगी as a product. और जब भी आपको हीट दिख रही है इन प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स हीट इज गेटिंग रिलीज्ड, दैट इज द एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है बच्चों जिनको कराने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. द रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर हीट और एनी एनर्जी टू प्रोसीड. ओके, सो इन दिस केस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग is a better strategy to control environmental pollution? Okay, so देखते हैं बच्चों. First of all, tetrachloromethylene की बात करते हैं. तो tetrachloromethylene has an adverse effect on ozone layer. It depletes with the use of tetrachloromethylene, tetrachloroethylene, right? उसके बाद है oxides of sulfur and nitrogen, SO2 and NO2. These are greenhouse gases बच्चों which cause pollution in the environment. So NO2 basically released from biomass combustion. It increases the global warming by aiding the formation of photochemical smoke. It creates the smoke जिसकी वजह से environment पर adverse effect पड़ते हैं. अगर आप SO2 की बात करेंगे तो SO2 also contributes to the formation of aerosol which directly or indirectly affects the global
warming, which directly affects the environment. Okay, so बचा है आपका बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is also a greenhouse gas बच्चों, that is also a greenhouse, but in the natural carbon cycle, जो carbon cycle चलती है, carbon dioxide is stored in sinks such as oceans, forests, and is released by the sources. So naturally carbon dioxide stays roughly balanced between sources and sinks. So एक cycle complete हो जाती है जिसकी वजह से इसका effect environment पर बुरा नहीं पड़ता, इसीलिए द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, चलिए, these were the questions of chemistry. Now let's discuss the questions of biology. हेलो एवरीवन, आई होप आपका जीटीएससी बहुत अच्छा हुआ एंड यू फाउंड द क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग. So I know you guys are also curious about to know the answer of various questions. So let us start discussing the biology part. So the first question in the biology part was, which of the following seed is not dispersed by wind? As you can see here, P, Q, R, they have hair or feather-like structure, okay, which supports the dispersal by wind. But if we talk about S, it has spiny structure, so which attaches to the body of animals and then उसका dispersal होता है. So S का dispersal take place with the help of animals. So the correct answer is D, S. Okay. Now, moving to the next question. The question is asking, in which of the following mode of reproduction an individual produces offspring without the help of another individual? So if we talk about the reproduction, it is of two types, sexual and asexual reproduction. ठीक है, asexual reproduction is a type of reproduction which involve only one organism. It means the offspring is produced without the help of another individual. So the correct answer is option D. Though fertilization is a fusion of male and female gamete, it is a part of sexual reproduction. And if we talk about hybridization, it is mixing the character of different varieties to create a hybrid. So option D is the correct option. Moving to the next question, production of sound is done by, as you know, we have a voice box जिसको हम larynx बोलते हैं. So the production of sound is done by the voice box, that is larynx. What are nares? These are the opening. The nares are the opening जिससे हम air को inhale करते हैं. We intake the air. Lungs, किसमें? Lungs, as you all know, it helps in the breathing, exchange of gases and all. If we talk about the pharynx, it is the common part between the esophagus and the food and the windpipe. So the correct answer is D, larynx. Moving to the next question. To prevent the entry of food into the trachea, the opening is guarded by. So जो opening होती है trachea की, ये जो opening है इसको हम बोलते हैं glottis. The opening is called as glottis, which is covered by a flap-like structure. ठीक है, cartilaginous flap होता है, which is covered by a cartilaginous flap-like structure, which we called as epiglottis. ठीक है, सो व्हेन वी स्वेलो द फूड, ये क्या करता है, व्हेन वी स्वेलो द फूड, ये क्या करता है, ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है, ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, सो दैट फूड डज नॉट एंटर इनटू द विंड पाइप. सो द करेक्ट आंसर इज एपिग्लॉटिस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट you have to read the passage. The passage is saying respiration is the basic characteristic, energy release होता है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, एंड ये जो एनर्जी है वो वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज होती है. एंड द ऑप्शंस आर सेइंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यस, इट डज इन्वॉल्व. ब्रीदिंग हो गया. इन्वॉल्व इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. यस, इंस्पिरेशन मतलब इनहेल करना एयर को, एक्सपिरेशन मतलब एक्सहेल करना. Third involves oxidation of glucose. Yes, it does involve the breakdown of glucose to release energy. So all the above are correct. Moving to the next question. This is a easy one. In the given figure, identify the process X and Y. As you can see here, the X, transfer of pollen grain from anther to stigma of
अनदर फ्लावर, या अलग अलग फ्लावर में हो रहा है, तो ये कौन सा पॉलिनेशन हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. बट इफ यू सी द वाई, द ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम स्टिग्मा टू पोलन ऑफ सेम फ्लावर में हो रहा है, तो ये कैसा पॉलिनेशन हो गया, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Moving to the next question. The question is saying Mukta conducted an experiment in which two potato tubers X and Y of equal size were peeled, and a cavity was made in each of them. X was boiled कर रहा है X को, ठीक है. While Y was not, the cavities in both the tubes were filled with sugar solution. They were then placed in beakers containing distilled water. ठीक है. अब हमें पता है कि ऑस्मोसिस होगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा. बट इफ यू टॉक अबाउट एक्स, इसको बॉयल किया है, इट मीन्स जो एक्स है उसके सेल्स क्या है, डेड हो चुके हैं. सो द ऑप्शन विल आर लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इंक्रीज इन बोथ पोटैटो. नो, एक्स में तो नहीं हो सकता क्योंकि वो डेड हो चुका है. लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन डिक्रीजेस इन बोथ ट्यूबर, एक्स में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा. लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इंक्रीज इन ओनली पोटैटो ट्यूबर एक्स. नो, एक्स में नहीं होगा क्योंकि एक्स में डेड सेल है. सो इन द डी, ओके, बिकॉज वाई लिविंग है. सो आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस एंड आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट हुए हैं. गुड लक. Welcome to the math section. My name is Rohan. Let's do it. So now we have to find out the addition of all these terms, right? So if you just look at closely at all these terms, we'll find out P into P minus Q will become P square minus PQ, Q into Q minus R will become Q square minus QR, and R into R minus P will R square minus RP. If you add all of these terms, you'll get P square plus Q square plus R square and minus PQ minus QR and minus RP. So finally, yes, B will be the right answer. In this question, you have to find the value of x. If you look closely, all the bases are same. So you have to just play with the exponents, right? So just look at all these exponents. So can we add the exponents of the first two terms, 4 and minus 7, because the base is same. So we'll add it, we'll get, and on the right hand side, we'll have 2x minus 1. So we can now compare the exponents. So if you compare the exponents, you will find out it is 4 minus 7, it is 2x minus 1. You just have to find the value of x. X comes out to be minus 1. Yes, B is the right answer. In the third question, you have to find out that there are 10 points having different abscissa and same ordinates. That means the y-axis is the same, but the x is different. So this looks like a scenario in this case. All the y's are same. If this is, let's say 3, let's say this is 3. So all of these are 3, but the x is changing. This might be 1, this might be 2, this might be 3. So this is, if you join all these lines, you will find a line parallel to the x-axis. You will find a line parallel to the x-axis. So that means, yes, B is the right answer. Now in this question, you just have to simplify. Look very closely, you'll get the answer. A plus B, if you multiply, you'll get 2a square minus 3ab plus ac plus 2ab minus 3b square plus bc. I have multiplied a first, then b to all these three terms, then c to all these terms, and then, okay. Then finally, we have to add and subtract, and we have also checked the minus. This will become minus, and this will become plus. So now if you solve it, you'll get C, 2a square minus 3b square minus ab minus ac plus 4bc. Right, that's right. Okay. So now in this question, this is a tricky question. We have to find out the snowfall and the time. The plot is drawn, right? So you have to find out the time. We have to find out which of these actions, which of these graphs may not be correct. So A looks like a possible graph because the snowfall is increasing with the time. The snowfall is increasing with time. So this is time, this is snowfall. Similarly, in this case, the snowfall is decreasing with the time. That also looks like a probable case. In D option, the snowfall is constant throughout the time. The snow is falling constantly throughout the time. But in this case, the snowfall has become suddenly very large at one point. This might not be a case, right? So B cannot be true. So B is the right answer here. In this question, we have to plot all these points to understand how they look like. So I have drawn the points. I have drawn 4 points. If you look at them, you'll find out none of these points are forming a figure. If you join all of these points, you'll get a straight line. So try to draw it on a graph if you'll get a clear idea about it. So yes, the answer will be they are all lie on a straight line. In this question, a plot is sold for this and the owner loses 58%. That means this is a selling price. You have to find out the
cost price. So we have assumed cost price to be X. So now X minus X, 15% of X will be 18,700. Try to find out the value of X, I'll get 22,000. Now the new gain, we have to gain 15%. So we have to find out the new SP. So yes, the new gain is 15%. So SP will be CP plus 15% of CP. And as I have calculated, it is 25,300. That is C. Now let's move to the next question. In this question, we have to simplify this equation. Just look at each of these numbers are a power of 3. 81 could be written as 3 to the power 4. 243 could be written as 3 to the power 5. So now you can change it in the 3 power of 3's. And now you have to do the laws of exponent. You have to apply the laws of exponent. So minus 3 and this denominator 3 will go up and it will go minus 6. And 4 into 2 will 8, 5 into 3, 15. We have to add all these powers on 3 because we are multiplying all these bases. So we will finally end up at 3 to the power 17. That is the C answer. Now let's go for the next question. This is a bit tricky question. A bag contains 5 red balls and some blue balls. So we have assumed that the red balls are 5 and the blue balls are X, right? So total number of balls will be 5 plus X. So the probability of drawing a blue ball will become X upon 5 upon plus X. That is favorable by total, right? So X upon X plus 5. So probability of drawing a red ball will become 5 upon 5 plus X. Now according to the question, the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball. So probability of drawing a blue ball, that is X upon X plus 5 is equal to 2 into 5 upon X plus 5. X plus 5 will be cancelled and we'll get X is equal to 10. So yes, that is the right answer. B is the right answer. Now in this question, you have to find a simplified expression. You just have to open it using the formula a plus b whole square and a minus b whole square. We will be using a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, and a minus b whole square will be used as a square plus b square minus 2ab. Now if you will add all of these, the 2ab part will cancel because it is minus 2ab and plus 2ab. Will only left with the square part. So 49, 49, 98, 64, 64, 128. So yes, that is what we have in the C option. So C is right. And the interior angle of a regular polygon is given, and you have to find out how many sides does it have. So we have to use the formula for the interior angle of a regular polygon. Okay, interior angle formula. So if you just look at this formula, you'll try to find out n, you'll get n as 10. So yes, D is the right answer. Now let's move ahead. In this question, we just have to put s is equal to 3 and you'll get the answer. So if you put s is equal to 3 in this whole equation, you'll get 66 as the answer. Just look at this. Yes, so 66 is the right answer. You just have to put s is equal to 3 in the complete expression. Now here we have to find out the range of the graph. The range is always maximum minus minimum. The range is always maximum minus minimum. So what is the maximum peak? It looks like 300. What is the minimum peak? It looks like 100. So what is the difference between them? It is 200. This is the right answer. Here also we have to put 2 root 2 in place of p. If you put 2 root 2 in place of p, you'll get 2 root 2 square minus 2 root 2 into 2 root 2. This will cancel with this one and we'll only left with 1. So yes, 1 is the right answer. Now in this question, you again have to subtract. So just try to focus on this from word. This from is the keyword. So we have to subtract 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from this another term, right? So we'll subtract it. So it will look like this. So we'll have to apply this minus to all of these. Okay. And if you will solve it, you'll get A as the right answer. Now in this case, the sides of the triangles are given and the last side is not given. We have to find out the minimum value of it. So we have to understand the minimum value of it is always one side less than another side, and we must get it is positive because sides cannot be negative, right? So it cannot be 6.5 minus 10, it must be 10 minus 6.5, right? So 10 minus 6.5 is 3.5. But another criteria in this question says A is a whole number. So the third side is always greater than 3.5. 3.5 is the minimum value, right? So we have to look for some whole number which is just more than 3.5. So the closest one is 4. So 4 is greater than 3.5, so therefore C will be the answer. In this case, this is a similar question. You have to find out the maximum and minimum values of it. So just look at it. If A, B, C are 3 cities and the distance between A and B is 200 miles and B and C is 300.
So the maximum value of AC can be 500 and the minimum could be 100. So it must be greater than 100 and less than 500. So look at the options. You could just find out 350 is actually satisfying both of these criteria, as it is less than 500 and greater than 100 as well. Okay, so B is the right answer. Now in this question, the top of the tree is broken. So it looks like this. The top of the tree is broken. The height of the unbroken portion is 5, the broken portion is x, and the distance by which it touches the ground is 12. So it looks like a right angle triangle. Now it looks like a right angle triangle. So in the right angle triangle, if this is 12, this is 5. So this will be 12 square plus 5 square under root. You'll get 169 under root, that is 13. So now 5 is the unbroken portion, 13 is the broken portion, right? So all we have to add all of these to get the total height of the tree, and that comes out to be 80. So C is the right answer. Now this question is a direct question. This is very direct proportion question. Just look at it. 8 bottles, 12 liters, and how much will it be for 150 liters, right? How much bottles? So similarly, 8 bottles upon 12 liters is equal to x bottles upon 150 liters. You have to try to find the value of x, which comes out to be 100. If you try to solve it, so yes, 100 is the right answer. If each edge of the cube is doubled, so just look at it. The surface area of a cube is 6a square. The surface area of a whole cube is 6a square. Now we have doubled each and every side, so it becomes 6 into 2a whole square. So it becomes 24a square. 24a square is 4 times larger than 6a square. So we will say it will be 4 times, right? Okay. So now you can move to the aptitude section. That was all in the math section. Thank you. Bye-bye. Hello everyone. Welcome to GoPrep. And now let us straight away begin with the discussion of the questions asked in slot 4 from the aptitude section. Let us begin. जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था, and the question was, if the word resident, RESIDENT, has been coded as TSEDINER, अगर रेजिडेंट को इस तरह से कोड किया गया है तो अगस्त को कैसे कोड किया जाएगा? तो लॉजिक ये था कि द लास्ट लेटर्स, द एक्सट्रीम लेटर्स हैव बीन इंटरचेंज्ड. आर की जगह टी आ जा रहा है, टी की जगह आर आ जा रहा है. नाउ रेस्ट ऑफ द लेटर्स इन ग्रुप्स ऑफ 2 विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस. सिमिलरली द एक्सट्रीम लेटर्स विल इंटरचेंज, ए की जगह टी, टी की जगह ए, एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द लेटर्स इन ग्रुप्स ऑफ 2 will interchange. All right, so TGUSUA will be the right answer. Next question, my dear students, जो next question था ये pattern completion से था. यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें 3 साइड्स होते हैं. यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 4 साइड्स होते हैं. यहाँ पर 6 साइड्स होते हैं हेक्सागन में. तो अब यहाँ पर हमें एक पेंटागन यानी 5 साइड्स वाला ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चाहिए था. सो ए एंड बी तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गए, डी भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज पेंटागन हमें यहां नहीं यहां चाहिए. दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर एंड हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहां देखोगे तो 3 6 जा 18, बट 5 3 जा 15 नहीं हो रहा है, 8 2 जा 16 नहीं हो रहा है. सो व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस मल्टीप्लाई? रियल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई क्या है, आइए देखते हैं. सो द रियल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई इज दिस कि अब जैसे यहां पे 3 और 6 है तो यहां पे आप देखो 3 + 6 कर दो, आ जाएगा 9. 9 का डबल इज 18. यहां पे देखो आप इसको 5 + 3 करो, आएगा 8. 8 का डबल इंटू 2 इज 16. सिमिलरली 8 + 2 करो, 8 + 2 is 10 and 10 का डबल is 20. Similarly 4 + 6 करो 10 and 10 का डबल is 20. So the correct answer of this question is 20. All right everyone. तो यहां पे जो सिंबल्स हैं उनका यूजुअल कन्वेंशनल मीनिंग हो ये कोई जरूरी नहीं है. क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, अब यहां पर आपको इस पैटर्न को अगेन कंप्लीट करना है. जो रिलेशन इस फिगर का इससे है वही रिलेशन इस फिगर का इससे होगा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे ये टोटल 6 साइड्स हैं, राइट?
Total there are 6 sides. So there are 6 sticks. 6 sticks. यहां पे कितने साइड्स है? 1 2 3 and 4. So there will be 4 stick. There will be 4 stick. अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टिक्स हैं ये कॉर्नर्स की तरफ नहीं, मिडिल ऑफ द साइड्स की तरफ है. जो स्टिक्स हैं ये कॉर्नर्स की तरफ नहीं, मिडिल ऑफ द साइड्स की तरफ है. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट, एंड ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि स्टिक्स इस तरह से होंगे या इस तरह से होंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट एवरीवन, बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट, सो ए ये बी है, ये सी है, ये डी है. द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमेज बी. क्लियर एवरीवन? सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमेज बी. क्लियर? क्योंकि हमें इनको कुछ इस तरह से क्रॉस करवाना था जैसा कि यहां पर कराया गया था. सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर एवरीवन? नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इफ y is to the east of x, suppose this is x, if y is to the east of x and x which is, ये which x के लिए है, y is to the east of x, x which is to the north of z, and if p is to the south of z. So if y is to the east of x, x which is to the north of z, and p is to the south of z, then p is in which direction with respect to y? P is in southwest direction with respect to y. Option number D is the correct answer. Clear everyone? Option number D is the correct answer. Next. Now my dear students, अब आपको इनमें odd one out बताना है. Lichens, mosses, ferns and cacti. My dear students, cacti, these grow in warm areas, hot areas, desert areas, जहां पे बिल्कुल गर्मी होती है. But all these grow in relatively cooler areas, जहां पे ठंडी होती है, जहां पे नमी होती है तापमान में, right? And hence cacti is different, all right, and hence will be the odd one out. Next. Now my dear students, अब यहां पर आपसे कहा गया है that how many people can speak English, Hindi and Telugu? English, Hindi and Telugu. My dear students, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, मराठी बोले ये कोई जरूरी नहीं, हमें चाहिए जो इंग्लिश भी बोलता हो, देन जो हिंदी भी बोले एंड तेलुगु बोले. माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे ऑप्शन देखो. अगर आप 15 की बात करो, 15 तो कहीं ना कहीं सम करके आ रहा है, एडिशन करके आ रहा है. ये जो 8 है, ये जो आपको 8 दिख रहा है, दीज पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो 8 आंसर नहीं हो सकता. ये जो आपको 5 दिख रहा है, दीज पीपल डू नॉट स्पीक तेलुगु, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. तो ये जो 2 है, दिस 2, दिस इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज ये जो 2 लोग हैं, ये स्क्वायर में भी आते हैं, यानी इंग्लिश भी बोलते हैं. ये लोग सर्कल में भी आते हैं, तो हिंदी भी बोलते हैं. स्क्वायर में भी आते हैं, इस वाले स्क्वायर में, तो तेलुगु भी बोलते हैं. एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2. क्लियर एवरीवन? सो द ओनली करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 2. ऑल द अदर ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड. 2 इज द राइट वन. नेक्स्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इन अ सर्टेन कोड, nose is coded as ear, ear is eye is skin, skin is tongue and tongue is cheek. अब यहां पे लोग गलती क्या करते हैं कि nose is ear but ear is eye but eye is skin, skin is tongue and tongue is cheek. तो कुछ भी पूछा जाए सबका आंसर लास्ट में चीक उठाकर कर देते हैं. ये सबसे बड़ी गलती है. ये कोई कंटिन्यूटी में नहीं है, ये कोई कंटिन्यूटी में नहीं है. क्या कहा जा रहा है? nose is ear, comma, ear is eye, comma, eye is skin, comma, skin is tongue, comma, and tongue is cheek, comma. That's it. A person wants to watch Cricket World Cup. Which organ will he use? We use eyes to watch. Eyes to watch. तो आंसर eye होगा. But in their language, eye is skin. So now the final answer will be skin. अगर इनके आंसर में, इनके लॉजिक में eye को एप्पल लिखा जाता तो हम भी एप्पल मार्क करते. भाई आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है. Which organ will we use to watch?
वॉच कुछ भी देखने के लिए हम आईज का यूज करते हैं, बट इन देयर लैंग्वेज आई इज स्किन, सो वी विल राइट स्किन. अगर इनके लैंग्वेज में आई टोमेटो होता, हम टोमेटो मार्क कर देते. अगर इनके लैंग्वेज में आई मोबाइल फोन होता, मोबाइल फोन मार्क कर देते. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको बताना है दैट इन द प्रॉब्लम फिगर विच वन ऑफ द सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विथ सिंबल स्टार. स्टार के ऑपोजिट क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, डाइस से आसान टॉपिक तो हो ही नहीं सकता. मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं कैसे करोगे. कई रास्ते हैं डाइस को करने के, एक दो नहीं कई रास्ते हैं. मैं एक रास्ता बता देता हूं. इफ 2 or more images of the same dice or cube are given, if 2 or more images of the same dice or cube are given and they have exactly two common faces, then the uncommon faces are opposite to each other. तो अब आप यहां देखो, if 2 or more images of the same dice are given, if 2 or more images of the same dice are given and they have two common faces and plus, if they have two common faces and plus, then the uncommon faces star will be opposite to 8. तो स्टार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार का ऑपोजिट हो जाएगा 8, and that is the right answer. Clear everyone? So this is option number A, this is option number B, this is C, this is D, and C, that is 8 is the right answer. Clear everybody? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको माइंड में रखना. और इसके अलावा भी और तरीके हैं जो कि आगे कभी समय मिलेगा तो जरूर बताएंगे. Let us come to the next question. My dear students, now the question is of odd one out. All of the following numbers are related in some way. Find the odd one out. My dear students, अब कुछ लोग यहां पे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं. नंबर ऑफ डिजिट्स क्यों चेक करोगे? अगर मैंने यहां पे 0 लगा दिया तो ये भी 3 डिजिट हो जाएगा. ऑलराइट, तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स मत चेक किया करिए. प्लीज डू नॉट चेक नंबर ऑफ डिजिट्स इनिशियली. आप उसके अलावा बाकी चीजें देखो. आप ये देखो, ये 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, बट ये किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है. हेंस इट इज द ऑड वन आउट. तो आप मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज देखिए. इसको ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, ये पहले मत देखा करिए. पहले इंपॉर्टेंट लॉजिक देखना है. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. All right. So with this, we come to an end of the session. I hope you all really enjoyed the session. All the questions were clear enough. So till we meet again. Bye-bye. Thank you and take care.